Hello all, welcome back to the BioRocks channel. In this video today we are going to learn about the plant anatomy, and we all are well aware that it's going to be, anatomy is going to be a branch of biology which deals with the internal structure. So purely we're going to speak about the plant tissues, okay? So we know that a tissue is going to be something which is going to be having a group of cells which are having basic same origin, same function. We regard them as the tissues. And purely speaking about the plant tissues, they're classified into two types. One is going to be the meristematic tissue, which is going to indefinitely have a cell division process. They just undergo continuous cell division process, adding up new cells. So they are mitotically very active. So these cells are going to be usually adding up new cells for the plant growth process. It might be linearly or it might be the what you call is in the width. So the meristematic tissues just add up new fresh cells. And the second category that we have is the permanent tissues. Today we are not going to talk about the permanent tissues. We are concentrating on the meristematic tissues, children. So before I teach the meristematic tissues, we need to know about the characteristics of these cells found in these tissues. As you know that these are continuously dividing cells, these are going to have a what we call is a very dense cytoplasm. They have a prominent nuclei, and these are going to have a rich number of mitochondria which are metabolically active and participating in the cellular respiration process in order to enable the production of ATP for the utilization in the cell division process, children. Okay, remember that ये cells में अगर देखा जाए तो there are no intercellular spaces. They're compactly arranged. इनका cell wall जो है primary cell wall is being built up by the celluloses, by the pectin. Okay, and these are going to have a very thin cell wall, and these excuse me, these cells are going to have a prominent nuclei, more number of mitochondria, denser cytoplasm, and no intercellular spaces are being found. See, one of the important things here is there might be vacuoles present, but there will be very tiny vacuoles, not the larger vacuoles found over here, because you have to know that vacuoles are usually seen for the storage of the nutrients and ions. But we know that these are not for the storage purposes, but these cells are active for the cell division. So there are rarely found vacuoles, or no vacuoles found, are thin vacuoles, that is a very tiny vacuoles are being found over here. Okay, it is possible that the vacuole may fill 95% or more of the cell's total volume. So we basically need these what you call is cells here which are active for cell division. So we don't find these huge vacuoles found over here, children. Okay. Now, coming on to the meristematic tissues, based on the different sorts, like whether it's going to be the origin and function, or whether it's on the based on its position, and based on its what you call is function. So origin based on the functions, based on the locations, we are going to divide the meristematic tissue into some different sorts. Okay. The first thing that we are going to see here is going to be based on the what you call is origin. What we do is we are dividing our meristems into three categories, children. They are going to be the promeristems, the primary meristems, and the secondary meristems. So promeristem is something that you need to remember, that it's going to be something found in the embryonic stages of the plants. Usually in the embryonic stages, they have been found in the shoot and the root tips. Okay, these are going to be called as a promeristems. As you can see, it's an embryonic meristem, and this particular thing is going to, promeristem will be undergoing the cellular division processes to produce the primary meristems. Okay, and we need to remember that our primary meristems are those which are going to be actually giving rise to the what you call is a permanent, primary permanent tissues, like your parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, which are used for packaging, for making up the primary structure of the plant body. So this is a promeristem that we are going to see.
Again, based on the origin, we are going to have another category which is being called as the primary meristems. So we know that the promeristems are undergoing cellular division processes to produce this primary meristems, children. And these primary meristems, what they do is they are going to give rise to the primary tissue systems, what I spoke about, the primary permanent tissues like your parenchyma, collenchyma, and the sclerenchyma. Okay, so that's what he has given you here. And where are these primary meristems mostly found is nothing but they are present just below the promeristem, because promeristem is continuously dividing and they just add up. So promeristems के नीचे रहेंगे आपके primary meristems जो आपके primary permanent tissues बनाते हैं. Okay, so हमने देखा कि हमारे मेरिस्टम्स origin के हिसाब से प्रोमेरिस्टम्स है जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में देखे हैं, फिर प्राइमरी मेरिस्टम्स है चिल्ड्रन, फिर उसके बाद हमारा जो आता है दैट इज गोइंग टू बी द सेकेंडरी मेरिस्टम्स. ओके, तो हमारे प्रो मेरिस्टम ने डिवाइड करके प्राइमरी मेरिस्टम दिया है. And the next one that we are going to have is a secondary meristem. Secondary meristems जो है आपके usual dicot plants में जो आप जो secondary growth देखते हो वहां पर जो tissues बनते हैं वो almost all like आपके जो cork cambium है जो आपके stem को बहुत strong protection देता है, और आपका vascular cambium जो है जो आप देख सकते हो यहाँ पर examples. आपको पता है कि cambium is a tissue that is being found in between the xylem and the phloem. So we call it as a vascular cambium. Okay, so आपको ये याद रखना है कि आपके later years में plant में secondary growth के दौरान जो meristems देखे जाते हैं उनको हम secondary meristems बोलते हैं. ये secondary growth में help करते हैं और ये क्या करते हैं आपके secondary permanent tissues produce करते हैं, जैसे कि आपके कहाँ पर आपके secondary cortex हो सकता है या secondary xylem हो सकता है जो हम लोग देखते हैं. तो इन सब चीजों को हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टम्स में डालते हैं. सो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम डिवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन द ऑरिजिन. जैसे कि हमने बेस्ड ऑन द ऑरिजिन उसको डिवाइड किया है कैसा, प्रोमेरिस्टम है और प्राइमरी मेरिस्टम है, सेकेंडरी मेरिस्टम है, और दूसरा आते हैं तो बेस्ड ऑन द पोजीशन के हिसाब से हम लोग हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिवाइड करते हैं. एपिकल जो एपेक्स में देखा जाता है, जो आपके रूट एपेक्स में और शूट एपेक्स में देखा जाता है, जो आपके रूट और शूट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम्स है और लैटरल मेरिस्टम्स है चिल्ड्रन. एपिकल मेरिस्टम आपके लिए इजी है बिकॉज आपको ये याद रखना है कि एपिसिस में रहते हैं, रूट एपेक्स में और शूट एपेक्स में रहेगा, और ये उनके लीनियर ग्रोथ में हेल्प करता है. तो हम लोग क्या करते हैं अभी सेकेंड कैटेगरी देखते हैं इंटरकैलरी. थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये समझना जरूरी है. इंटरकैलरी मेरिस्टम्स ज्यादातर हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कहाँ पर, मोनोकॉट स्टेम्स में देखते हैं, जैसे ग्रास प्लांट्स है, मेज है, आपके पैडी. ओके, and these monocot plants that whatever you see are going to have the intercalary. Actually इसका इंटर का मतलब होता है दोनों के बीच में. क्या दोनों के बीच में, आप दो नोड्स के बीच में देख पाते हो. ओके, इंटर नोड्स में देख पाते हो. और ये भी याद रखना है कि आपके जो एपेक्स में मेरिस्टम बैठा है, जैसे वो डिवाइड कर रहा है और जोन ऑफ इलोंगेशन में जाता है तो क्या हो जाता है, आपका जो एपिकल टिश्यू है वो मेरिस्टम रहेगा और बीच में जोन ऑफ इलोंगेशन और मैच्योरिटी के बाद में वो टिश्यू क्या बनेगा, आपका परमानेंट टिश्यू बन जाता है. तो आपके परमानेंट टिश्यूज के बीच में जो रह जाता है उसको भी हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स बोलते हैं. ओके, आपको ये याद रखना है कि आप इसको देखते हो परमानेंट टिश्यूज के बीच में देख पाते हो. ओके, इंटरनोड्स में देख पाते हो और लीफ ब्लेड्स में देख पाते हो आप ये सब चीजें. ओके, सो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर मोस्टली फाउंड इन द ग्रासेस. ओके, एंड आपको ये याद रखना है कि जो प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ का जो वैस्कुलर कॉर्ड कैम्बियम नहीं देखा जाता है एंड जो उनके गर्थ में विड्थ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं वैसे प्लांट्स में देखा जाता है, जैसे मैंने ग्रासेस बोला है, मेज बोला है उसमें. तो ये कहाँ पाए जाते हैं, यूजुअली आपके लीफ बेस में नोड्स के बीच में रहते हैं ये वाले. ओके, सो इनको हम लोग बोलते हैं. और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स किसमें हेल्प करते हैं, जब दे आर गोइंग टू बी, यूजुअली आप ग्रास को कट कर देते हो लॉन में, वो फिर से ग्रो हो जाता है, तो वो जो रीग्रोथ हो रहा है आपके ग्रास में दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द
इंटरकैलरी मेरिस्टम्स ओनली। ओके, सो हमने पोजीशन के हिसाब से देखा है क्या, हमारा फर्स्ट वाला क्या देखा है, इस एपिकल मेरिस्टम है। हमने ये बोला है कि आपके रूट और शूट एपेक्सेस को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। और दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, जो आपके ग्रास प्लांट्स में रीग्रोथ करवाता है। ये वाला परमानेंट टिश्यूज के बीच में देखा जाता है, नोड्स के बीच में देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट वाला होता है आपका लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं। तो लेटरल मेरिस्टम्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ये आपके सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और आपके प्लांट का डायमेंशन बढ़ाने में, विड्थ या गर्थ बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं यूजुअली। ओके, तो अगर आप देख पाते हो यहाँ पर, तो लेटरल मेरिस्टम्स किस में हेल्प कर रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हॉरिजॉन्टल गर्थ को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, vascular cambium is going to be the one of the lateral meristems। जैसे हमने बोला है कि आपके फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो टिश्यू पाया जाता है, इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो ये वैस्कुलर कैम्बियम का क्या कर रहा है, इस जैसे आपका ये टिश्यू डिवाइड करता रहेगा, so what happens is the width is going to be increased, right? It adds up some mass over there. The cambium is a thin branching cylinder, okay, that except for the tips where the apical meristems are located. And remember that ये आपका जो cambium है, ये responsible किसके लिए होता है, आपके नए cells को add करने के लिए, किन के बीच में, xylem और phloem के बीच में, जिसके वजह से क्या होगा, thickness बढ़ेगा, girth बढ़ेगा आपका plant body का। ओके चिल्ड्रन, तो हमने देखा कि हमारा जो प्लांट्स है, वो हमने देखा है कि उनकी जो मेरिस्टम्स है, based on the what you call is origin, and based on the origin we divided the meristems into what, the promeristems है जिनको primordial बोलते हैं, embryonic stages में देखते हैं। फिर हमने प्राइमरी देखा है, जो हमारे प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज प्रोवाइड करते, प्रोड्यूस करते हैं। फिर होता है हमारा क्या, सेकेंडरी होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी देखा हम लोगों ने कि हम मेरिस्टम्स को बेस्ड ऑन पोजीशन पे एपिकल बनाया है, और इंटरकैलरी है जो लेंथ बढ़ाता है, रीग्रोथ करवाता है ग्रास प्लांट्स में। और तीसरा हमने देखा क्या है, is going to be the lateral meristems, जो हमारे गर्थ को बढ़ा रहे हैं। ओके, लास्ट वाला जो होता है is going to be based on the function। ओके, फंक्शंस के हिसाब से भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज मेरिस्टम्स को हम डिवाइड कर रहे हैं एज प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम, प्रोकैम्बियम। प्रोटोडर्म वो होता है जो अर्ली स्टेजेस में ग्रोइंग सैपलिंग्स या प्लांट्स आप देखते हो, उनमें ये प्रोटोडर्म क्या करता है, आपके लिए एपिडर्मिस प्रोड्यूस करता है, ये वाला। ओके, सो प्रोटोडर्म, डर्म का मतलब क्या है, स्किन लेयर के जैसा। सो इनिशियल प्रोटोडर्म है ये वाला, जो आगे जाके क्या करता है, ग्रोइंग सैपलिंग्स में एपिडर्मिस प्रोवाइड करता है, ये है उसका फंक्शन। और दूसरा होता है हमारा प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम आपको पता है ये टिश्यू कहाँ पर है, वास्कुलर बंडल्स में है। तो आपको ये याद रखना है कि नए नए ग्रोइंग सैपलिंग्स में, प्लांट्स में जो टिश्यू हमारे लिए वास्कुलर टिश्यू प्रोड्यूस करने वाला है या प्रोवाइड करने वाला है, उनको हम बोलते हैं प्रोकैम्बियम। The meristem which is going to be seen in the early growing plants and saplings, which will be responsible for the production of your vascular tissues, is being called as a procambium. Next क्या होता है चिल्ड्रन, ग्राउंड मेरिस्टम। आप देख सकते हो ग्राउंड का मतलब जो आपके लिए वो एक फाउंडेशन, इट इज गोइंग टू बी लाइक अ पैकिंग थिंग। क्या है पैकिंग थिंग, कॉर्टेक्स होगा, हाइपोडर्मिस होगा, मेडुलरी रेज होंगे, आपका पित्त रीजन होगा, जो एक पैकिंग ग्राउंड टिश्यू के जैसा काम करता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं क्या, ग्राउंड मेरिस्टम। क्यों, बिकॉज दिस मेरिस्टम इज गोइंग टू एड अप द कॉर्टेक्स, the pith, the medullary rays, the hypodermal area, and all these things which are going to add up the material and which is going to help in maintaining and increasing the girth of the plant body, children. Okay, so these are the different sorts of things that you have to remember. See, primary में आप देख सकते हो कि आपका प्रोटोडर्म जो है एपिडर्मिस बनाएगा, आपका ग्राउंड मेरिस्टम जो है आपका पित्त बनाएगा, आपका कॉर्टेक्स हाइपोडर्मल एरिया बनाता है। ओके, और प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा, प्रोकैम्बियम जाके बनाता है आपके जाइलम एरिया,
एंड आपके क्या है, आपका फ्लोएम जो वैस्कुलर टिश्यू है उनको बनाता है. ओके, so these are all the different sorts of the things that we could see in the meristematic tissue, children. So remember that meristems are the primary tissue cells which are going to actually help in the continuous cell division. हमको continuous cell division क्यों चाहिए? रिपेयरिंग के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए. ग्रोथ कैसे होगा? लीनियर ग्रोथ भी हो सकता है, वो विड्थ में भी ग्रोथ हो सकता है. तो हमको चाहिए क्या? यहाँ पर मेरिस्टम्स चाहिए. हमको याद रखना है कि आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जैसे कि पैरेन्काइमा है, वो क्या करता है, समटाइम्स वो डिफरेंशिएट होने के बावजूद वो डी डिफरेंशिएट करके फिर से अपना डिवीजन या रिपीटेटिव सेल डिवीजन का वर्च्यू को, जो वर्क है, उसको फिर से रिकैप्चर करके वो कुछ नया टिश्यूज को भी बनाता है. तो दैट यू नीड टू रिमेंबर. So meristematic tissues play a major role not only in making the possibility in the linear growth, but also the secondary growth of the plant body and the regrowth processes also. Okay, so by this we are done with the meristematic tissue. In the next forthcoming video, I'll be coming along with the permanent tissues, children. So I hope you all have understood this particular topic, and if you like this topic, please hit the like button, and please do comment in the comment section, and please do share this channel to many of the children. Okay, thank you very much, and thank you all. Thank you.